Good morning, dear students. Welcome you all to the bio class. So today I'm going to explain you a very small topic, that is excretion in plants. Earlier we have studied about excretion in human beings, that is the more complex one. First of all, what is the process of excretion? How can we define excretion? It is the removal of waste products from the body. So plants do not have any well developed excretory system for the removal of waste, and it is much simpler than that of the animals. Plants में जो excretory system है वो बहुत ही simple होता है, animals की तरह complex नहीं होता, because they do not produce so much toxic substances as compared to animals. एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के कंपैरिजन में जो प्लांट्स के टॉक्सिक कंपोनेंट्स हैं वो उतने ज़्यादा नहीं होते क्वांटिटी में. सो दे हैव वेरी सिंपल प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन. So let's study about what are the various materials that are excreted in the plants and how they are excreted. So first is oxygen and carbon dioxide. These are the gaseous excretory materials and are eliminated by the process of diffusion through the stomata. As we have already studied that stomata helps in the gaseous exchange. Now the oxygen that is generated during photosynthesis is the excretory product for the plants. Plants do not use the oxygen, so they excrete it out by the process of diffusion from the stomata. Now next, the carbon dioxide that is released during respiration. It is also the excretory product for the plants, but at night, because during daytime the carbon dioxide is used by the plants for the process of photosynthesis, and similarly oxygen that is generated during photosynthesis is also utilized by plants for the process of respiration. तो जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जनरेट हो रही है वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में यूज़ करते हैं प्लांट्स, और जो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए यूज़ करते हैं, बट ड्यूरिंग द डे, बिकॉज फोटोसिंथेसिस अकर्स व्हेन देयर इज सनलाइट अवेलेबल. सो जो कार्बन डाइऑक्साइड दिन में जो प्लांट्स रिलीज कर रहे हैं वो तो प्लांट्स यूटिलाइज कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, बट ड्यूरिंग नाइट व्हेन फोटोसिंथेसिस डज नॉट अकर दे एक्सक्रीट दैट कार्बन डाइऑक्साइड. वो एक्सक्रीट करते हैं बाय द स्टोमेटा के थ्रू एक्सक्रीट करते हैं. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट, दैट इज द वाटर. Excess of water is lost by the process of ट्रांसपिरेशन और गटेशन. जो एक्सेस वाटर प्लांट्स में है वो प्लांट्स लूज करते हैं ट्रांसपिरेशन या फिर गटेशन के प्रोसेस से. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपिरेशन एंड गटेशन? क्या डिफरेंस है? ट्रांसपिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच वाटर इज रिमूव्ड as a water vapor. Water is removed in the form of water vapor. Water vapor की form में water remove हो रहा है. But guttation is a process in which water is removed as a water droplets. guttation में जो excess water है वो remove हो रहा है water droplets की form में. Next is the abscission of leaves containing stored waste products. Now we have seen that many leaves on maturation they become yellowish in color and they fall from the plants. जो leaves mature हो जाती हैं yellowish color की हो जाती हैं वो अपने आप खुद से detach कर लेती हैं plants को, they fall off. उन लीव्स में भी कुछ स्टोर्ड वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जो ऑटोमेटिकली लीफ फॉल होती है तो उनके साथ ही फॉल हो जाते हैं, उनके साथ ही निकल जाते हैं प्लांट से. एब्सिशन मीन्स फॉलिंग ऑफ लीव्स, फॉलिंग होता है लीव्स का. नेक्स्ट इज सम प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट्स आर आइदर स्टोर्ड इन वैक्यूल or are stored as resin or gums. Now in some plants waste products are stored as resins or gums.
कुछ प्लांट्स में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो रेजिन्स और गम्स क्या होते हैं? हैव यू एवर नोटिस द स्टिकी, मिल्की और ऑयली सब्सटेंस दैट कम्स आउट फ्रॉम द बार्क ऑफ लीव्स, बार्क ऑफ ट्रीज? जो ट्रीज के जो बार्क होते हैं उसमें से कई बार आपने देखा होगा वाइट कलर का मिल्की सब्सटेंस या ऑयली सब्सटेंस, स्टिकी सब्सटेंस निकल रहा है। वो क्या होता है? दैट आर दी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स ऑफ वेस्ट। तो वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं जो ऑटोमेटिकली रिमूव होते हैं प्लांट्स में से। नेक्स्ट, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो वैक्यूल में भी स्टोर होते हैं, सेलुलर वैक्यूल में, एंड दीज वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन दी लीव्स। तो जब वो लीव्स मैच्योरेशन पे डिटैच होती हैं प्लांट से, तो ऑटोमेटिकली वो वेस्ट प्रोडक्ट्स भी प्लांट में से रिमूव हो जाते हैं। लास्टली, plants also excrete some waste products into the soil around them. कुछ जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो प्लांट्स सॉइल में एक्सक्रीट आउट करता है विद द हेल्प ऑफ रूट्स। कुछ जो वेस्ट प्रोडक्ट्स रूट्स के थ्रू सॉइल में प्लांट्स एक्सक्रीट आउट करते हैं। तो ये कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं और by the mechanism by which the process of excretion occurs in plants, किस तरीके से plants इन waste products को excrete out करते हैं और क्या क्या waste products होते हैं। So I hope you have got the point. आपको समझ आया होगा the excretion in plants. This was a very small topic, so I hope it is clear to you. This is all for today. Thank you very much. Have a nice day.